सुप्रभात, मैं तुलिका शिकदार आपके समक्ष केंद्रीय विद्यालय गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। भारत
Respected Headmaster Sir, learned colleague, on this auspicious occasion of this Foundation Day of Kendriya Vidyalaya Sangathan, on behalf of our beloved Principal, Sri Vidyut Vikas Mahato, and on my personal behalf, I congratulate all of you to be part of this wonderful family, Kendriya Vidyalaya Sangathan. It's indeed a very auspicious day to all of us who are involved in this Kendriya Vidyalaya Sangathan family, because on this particular day in the year 1963, KVS was formed. In fact, myself was also born in the same year, so that's just a strange coincidence. Already, our most dynamic Seema Madam has told about the role of Kendriya Vidyalaya Sangathan. He is an all-through KVN, so give a big hand for that. Thank you, sir. And remained a student of this Vidyalaya only. Right from that's, class 1 to 12. That's great. So, your nostalgic feelings all the time when I see the different Sure, that's great. And already, as usual, our music teacher, Sandeep ji has already set the tune for such a wonderful, with some wonderful Kendriya Vidyalaya Sangathan gift. So dear friends, it's indeed a difficult time we are going through, with lot of learning loss all over the globe, and we are not exception to that. Also, there is huge digital divide, digital inequality, and this pandemic has just brought in a total standstill in all sphere of life. In the initial phases, we were also not very comfortable how to tackle such situation. But as we all know, we the human being having the highest brain capacity gradually develop the power of resilience to bounce back in such a condition. But friends, if you go through the reports or the publications in the various journals for the last 2 years, you will be in grief with the fact that huge number of people are the sufferers. And even if you consider India, which is a miniature globe, there also we can notice that the rural sector, they are suffering a lot. Lack of connectivity, lack of devices, and huge economic constraint even at the family level have put the whole system in doldrum. The UNESCO and the other United Nations forums are advocating the importance of reimagining education. That is the goal, that is the theme in some way or other for all the few occasions, be it be World Teachers Day, be it be the other important days, how we can reimagine the education scenario. That is the goal, and how more and more teachers' voice can be incorporated into the administration. So that amply suggests that we, the teachers, must have to play a very important role under such difficult condition. And here lies the importance of a good infrastructure. And we are lucky to have that
infrastructure in Kendriya Vidyalaya Sangathan. That means our vision and mission helped us to overcome this situation to a better extent than others in other sectors. We talk about knowledge, we talk about value, we talk about creativity, we talk about educational excellence, and all this through different policies we are imparting in all sphere of Kendriya Vidyalaya Sangathan. And this is, I am talking about the pre-pandemic era. And those vision and experimentation and innovations, these are all the buzzword in a post-pandemic era, which we can foresight long back, even in the pre-pandemic era. So that's why where the resilience among the Kendriya Vidyalaya students, among the Kendriya Vidyalaya parents, among the Kendriya Vidyalaya teachers are more than other educational sector. We should be proud of that. In the present scenario, changes are all around. We are talking about the 4 C's: the collaboration, the communications, the creative thinking, and the critical thinking to tide over such difficult situation looming large over the planet, not only in India, all through the globe. Even you are seeing this in the television and also in different media that the condition in European schools are at the present moment is very dangerous. I have friends from Ukraine, I have friends from Greece. They are talking about that despite huge difficulties, they have to run offline schools. And many of people are suffering. We are the frontline workers under such pandemic condition. And we should be proud of that. We have difficulties, you see. Even in the connectivity is a big issue. Even in this campus, all the areas are not well connected. Still, each one of us, right from the beginning till the end of the day, trying in various innovative ways to reach to our students. And that's because we are part of this Kendriya Vidyalaya Sangathan, and we are this very important stakeholders to impart education. And if you notice that up till number of ministries are experimenting through Kendriya Vidyalaya Sangathan. That's why in a month we are getting at least 10 to 15 different circulars where the staffs and the students have to be involved. That means it's actually a laboratory, experimental laboratory for educational purpose that we are doing. Sometimes even there are incoherence, but obviously these are all helping in rebuilding the nation, rebuilding the educational scenario. We have to use it in a pragmatic manner so that we are not being burnt out. At the same time, we must go on doing this because we need to be part of the change maker. We are to be the change maker of this scenario, and we must do that. And the vision and mission of Kendriya Vidyalaya Sangathan amply give us ample opportunities to do that. So with this few words, as because we have period, the second period will start immediately now, I once again congratulate all of you for your wonderful dedication, commitment, passion and attitude towards our student to overcome all difficult situations. Even many of us are the corona warrior. Even many of us
our family are suffering from corona. It started, I believe, if I am not wrong, with Parvez sir. At that time, we are very much scared about corona. We, at the very beginning, not much knowledge. And when we got the news that Parvez sir got affected with corona, we were frightened. But gradually, many of us were there with Parvez sir like that, and many of our family members are also suffering. So in the present scenario, we need to stay safe. That is very important. Please take it into consideration. It's not a one-man issue. Say, we are all advocating standard operating protocols, but a loophole on one of us can just destroy the whole practices that the others are practicing. So each one of us collectively have to fight against this dreaded corona, and we have to maintain the standard operating protocol for the coming, at least what I might believe, at least another 1 year, so that we can definitely win over this situation. With this few words, and once again, I am grateful to all of you that we are belonging to such a dedicated family of Kendriya Vidyalaya Sangathan. Sunil ji has already talked about that this is a miniature India that is nurturing our constitutional approaches, diversity in India. It inculcates tolerance, which is very much needed, democratic thoughts and values, collaboration, cooperation, and team spirits. So, we are talking, in the present era, we are talking about the global citizenship. If you consider India as a miniature globe, Kendriya Vidyalaya Sangathan, in each of its units, are nurturing that miniature globe. And we are lucky that as we are a Kavian, we are exposed to this miniature globe in all the 365 days, and this has given us the opportunity of learning each and every day, each and every second. Thank you all once again for being here and being a Kavian. Jai Hind, Jai KVS. Okay, Master Sir, to kindly address this gathering on this auspicious occasion. Sir, please. Good morning, everybody. Most honorable Principal Sir, and my dear learned colleagues, teachers, we are very lucky to be the employee of Kendriya Vidyalaya Sangathan. All of us, we know that KVS has been founded on 15 December 1963 with 20 regimental schools with the name of Central School. And there are 3 Kendriya Vidyalaya Sangathan, Kendriya Vidyalayas in abroad, and 1,245 Kendriya Vidyalayas are functioning in India. Kendriya Vidyalaya is such a institution, educational institution, the largest educational institution in the world, which maintains the unity in diversity. That's why every KV, every Kendriya Vidyalayas is called Mini India. अभी हमारा रिस्पेक्टेड जो सुनील कुमार सर बोले हैं, भारत में जितनी सारी केवी है उसमें भारत में बहु भाषाभाषी लोग, धर्म के लोग, पोशाक और खानपान में भी विविधता रहते हुए भी केवी ऐसे ही एक इंस्टीट्यूट है जिसमें सारे संप्रदाय के लोग
उनके बच्चे पढ़ते हैं। प्राइमरी सेक्शन में इसको मेंटेन करने के लिए हम लोग पहले मनाते थे कम्युनिटी लंच। कम्युनिटी लंच में ये फीलिंग आता है कि हर बच्चे किसी भी ऑफिसर, किसी भी कोई भी क्लास के हो, वो भूल जाते हैं। घर से बच्चे खाना लाते हैं और वो खाना आपस में बांटते हैं, शेयरिंग करते हैं। इसमें से हम बच्चों का अंदर जो है केयरिंग एंड शेयरिंग का भाव को प्रकट करते हैं, इनकलकेट करने का प्रयास करते हैं। बच्चों में सब्जेक्ट वाइज जैसे हम लोग टीचिंग तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ ऑनलाइन में हमारा पोस्ट स्कॉलस्टिक एरिया भी हम लोग देते हैं। ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूजिक, कोलाज, क्ले मॉडल, सारे क्लासेस ऑनलाइन के माध्यम से हो रहे हैं। साथ ही जो है सुबह जो है हम लोग बच्चों को मॉर्निंग असेंबली से ये जो एजुकेशन पहले ऑफलाइन में जैसे होता था, उसी प्रकार ही हम लोग ऑनलाइन में मॉर्निंग असेंबली में जितने सारे पहले आइटम्स होता था, सारे आइटम्स हम लोग इधर कंडक्ट कराते हैं, ताकि हमारे बच्चे को अंदर जो है होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। इस होलिस्टिक डेवलपमेंट अगर हो जाए बच्चे का अंदर, आगे जाकर हमारे बच्चे किसी भी क्षेत्र में उनको सफलता मिलती है। मुझे उम्मीद है कि हम सभी जो शिक्षक जो है कोरोना काल में सर जैसे बोले हैं, सभी लोग जो है एक सैनिक है, लड़ रहे हैं। और इस सैनिक हमारे देश का एक जो है जैसे नेशन बिल्डर्स का रूप में हम लोग जानते हैं। इस नेशन बिल्डर्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो फाउंडेशनल एंड लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, ये जो स्ट्रेटेजी है प्राइमरी सेक्शन से स्टार्ट हुआ है। हमें उम्मीद है कि फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी इसको बेस करके हमारे बच्चे सेकेंडरी हायर सेकेंडरी में आएंगे और पूर्ण विश्वास के साथ भारतवर्ष तथा पूरे विश्व में अपना नाम फैलाएगा, जैसे कि हमारे नीरज जी KVS का नाम ऊंचा किया है। इसी शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। एवं मेरे प्यारे साथियों, आज केंद्रीय विद्यालय अपना स्थापना दिवस मना रहा है, जिसकी कड़ी हम बन रहे हैं। और इस अवसर पर मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात रखना चाहूँगा कि जैसा कि मैडम ने बताया और बच्चे ने भी बताया कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में 1200 से ऊपर विद्यालय, 2-2.5 लाख बच्चे, बहुत सारे कर्मचारी और 25 रीजन और 3 विदेशों में विद्यालय इसके चल रहे हैं। भारत की अगर सचमुच पूछी जाए, आत्मा अगर समाहित है, विविधता में एकता की बात अगर करें, तो शायद केंद्रीय विद्यालय इस बात को बखूबी निभाता है। यहाँ जात, धर्म, संप्रदाय, प्रदेश, नाना तरीके की विविधता होते हुए भी यहाँ एकता देखने को मिलती है और उसको चरितार्थ करते हैं हम आप, और कोई दूसरा नहीं है। कोई भी संगठन, कोई भी संस्था अपने आप में महान हो सकती है, लेकिन महान तब होती है जब हम आप मिलकर काम करते हैं। हमारे आपके योगदान से वो संस्था महान होती है। कोई संस्थाएं महान नहीं हुई हैं, उसके कर्मचारी महान हुए हैं, उसके कर्मचारी महान हुए हैं, फिर वो संस्थाएं अपने आप ग्रो कर गई हैं। अभी 50 विद्यालयों के लगभग स्थापना हुई है, केंद्रीय विद्यालय संगठन के लेटर पैड पे है वो। तो दिन दिन हम उन्नत कर रहे हैं। गांधी जी का सपना था, जो भी था, अगर आप देखेंगे कि बुनियादी शिक्षा, तो बुनियादी शिक्षा को भी समेटे हुए है। एससीपीडब्ल्यू के जितने पीरियड होते हैं वो बुनियादी शिक्षा से ही संबंधित है, उनका दर्शन यहाँ झलकता है। और जब भारत की रही, दुनिया की सभी संस्थाएं बंद रही, इवन संसद बंद रही, न्यायालय बंद रहे,
महाविद्यालय बंद रहे, उस दौरान हमने काम किया और अपने आप को इतनी तरीके से ढाला है, नई नई तकनीकों से बच्चों ने भी ढाला है। तो ये हमारे आप को श्रेय जाता है, हमारे संगठन को श्रेय जाता है। हमने कहीं से भी विद्यालय में पठन पाठन की प्रक्रिया को बाधित नहीं होने दिया है। ये हमारा आपका योगदान, हमारी आपकी कर्मठता है। आज भी हम कोने कोने में घूमते रहते हैं, लेकिन नेटवर्क आ जाए, बच्चे को पढ़ा दें, 40 मिनट हो जाए, बच्चा बहाना बना लेता है इस तरह नेटवर्क नहीं था। तो मैं कभी कभी मजाक में उनसे कह देता हूँ, क्या मैं रिलायंस के टावर पर बैठता हूँ? ऐसा कभी भी नहीं है। लेकिन हम लोग लगे हुए हैं, डटे हुए हैं, किसी भी परिस्थिति में डटे हुए हैं और काम कर रहे हैं। संसद नहीं चली, न्यायालय नहीं चले, बहुत सारी संस्थाएं, तो कोरोना योद्धा हम भी, उन कोरोना योद्धाओं से जो सड़कों पर रहे हैं, हम भी उससे भाग रहे हैं। हमें वो श्रेय मिलना चाहिए, वो मिलता भी है और हम कर भी रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। परीक्षाएं हो रही हैं, हम करा रहे हैं। जान खतरे में है, नया वेरिएंट है, लेकिन फिर भी हम काम कर रहे हैं। बच्चों से मिल रहे हैं, बच्चों से बातें कर रहे हैं, बच्चों के साथ हैं, उनसे लेन देन हमारा है, तो हम काम कर रहे हैं। तो हम आप काम करेंगे, देश अपने आप आगे बढ़ेगा, संस्थाएं अपने आप बढ़ेंगी। और आज अगर स्थापना दिवस मना रहे हैं, इसको गौरवान्वित और आगे ले जाने का काम हमारा आपका ही है, दूसरा और किसी का नहीं। और अगर हम आप काम करते रहेंगे तो देश, संस्थाएं और बच्चे, इसका भविष्य मंगलमय होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय केवीएस। धन्यवाद। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।
हम भारत माता को सलामी देते हैं। जय हिंद।